Hello and very warm welcome to everyone on a new episode of Cricket Fan Corner. आज हम बात करेंगे कल के फाइनल के लिए जो कि अब से तकरीबन 8 घंटे दूर है और न्यूजीलैंड विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो लेट्स टॉक अबाउट फैसल. क्या कहते हैं कल के फाइनल के बारे में आप? वो एक बड़ा जो फेमस जो हॉलीवुड मूवी का डायलॉग है, इट्स शो टाइम. हम्म. So that's what it's about. Two best teams are here in the final straight away, हम्म. first of all. And the reason I'm saying best is that they have proven themselves. So Yeah. New Zealand have a bit of a tough path coming over there, but yeah, they did it. Similarly with Australia was even tougher. But in the end they managed to make it to finals. Defeating Pakistan in semi-final was not an easy task for them, but they did it in the end. So in a way यार काफी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है. हम्म. कहते हैं ना रीमैच ऑफ 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, वो तो वनडे टूर्नामेंट था बाय द वे. अब आज के मैच में आई बिलीव देयर इज अ बिट ऑफ अ ब्लो फॉर न्यूजीलैंड स्ट्रेट अवे. डेविन कॉनवे इज आउट. Yeah. And I was thinking about one thing. Yeah, he basically in first session he punched his bat when he got dismissed against England. Yeah. Had he punched the match away? That was my thought process. कि यार मतलब उसने ये तो नहीं कि because eventually final में अपना combination को change करना होगा. I believe Tom Salford he's going to come in. He's a very aggressive batsman. He's a wicket keeper. Yeah. I mean, he But has played against Pakistan as well. So, and yeah, I mean, he is the only option. So, yep, he's a he good will one. be a But part I of the believe team. winning combination break करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. Again, I believe toss will be crucial. And from both the side, I believe it will be a very interesting match. Because don't forget, Australia knows how to bring their A game in knockout Hmm. matches. They'll bring it. And same with New Zealand. New Zealand has done exceptionally well in the last 2 years. They have Yeah. won the World Test Championship final as well. So they're on a high as well. So I'm Yeah. expecting a very interesting game. And again, I believe कॉनवे का जो लॉस है वो थोड़ा हर्ट कर सकता है न्यूजीलैंड को. लेकिन उधर एडम जैम्पा कैन बी द मैन फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो या Yeah. So I think when we talk about the team 11, right? So Australia definitely same 11. They play against Pakistan. New Zealand, yes, the only change is Conway. He will be sitting out, and then Tam Safford will be in. Um, I think both side. We have been talking about this leg spinner. So I think Ish Sodhi and Zampa. I think both will be the key. Traditionally, Australia are very good playing against the leg spinners. So I don't know how Ish Sodhi will be bowling. Maybe he has to just use, because he has such a high arm action, and with his height like 6'2" he always has an advantage, right? I mean, he can just bring the ball from the top, and then especially with the top spin and all his abilities. So I mean, I am looking forward for an interesting match. अगर याद हो तुम्हें 2015, I think it was in Melbourne, New Zealand versus Australia final. So McCallum was there and Mitch Stark was coming, and then you remember that match, right? वो So I बहुत think अच्छा. exactly उस मैच से पहले यही एक्सपेक्टेशन थी कि यार न्यूजीलैंड बड़ी फाइट करेगा, आएगा, ये होगा. बट again, Australia team, I believe mentally, I mean, they are very tough team, right? I mean, especially when they comes to this knockout stage, उनकी जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. आई थिंक, और मुझे यही लगता है कि आप जब स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही आपकी इस तरह की आपकी आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप फिजिकली ट्रेनिंग है एंड देन मेंटली आपकी ट्रेनिंग है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस, मुझे लगता है कि सारे फाइनल्स में उनका ये होता है कि आप अगर सेमीफाइनल भी देखो, लाइक फिंच गॉट आउट फॉर 0, मैक्सवेल गॉट आउट, स्मिथ गॉट आउट, सारे प्लेयर निकल गए, बट स्टिल लोअर ऑर्डर स्टिल हैड अ बिलीव कि यार हम ये मैच जीत सकते हैं, और वो यही हुआ, जीते, राइट? आपको you have to understand one thing, आतिफ भाई, कि cricketing culture बड़ा strong है. I've been a part. See, I've played a lot of club cricket over here in Yes. Australia. From club level, from school level to club level to district level to first class level, ऐसा सपोर्ट है, इतने जबरदस्त ग्राउंड्स हैं. मतलब True. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था. आई वाज अ मैसिव क्रिकेट फैन, बट लाइक प्लेइंग इन सम ऑफ द ग्राउंड्स ओवर हियर, टर्फ बेस्ड ग्राउंड, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज में खेलना क्लब लेवल Yeah. पे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट इन पाकिस्तान. सो यार दे डिजर्व इट. एक उन्होंने ऐसा खूबसूरत सिस्टम बनाया है ना कि टैलेंट को लेके आता है, वो टैलेंट जो कि ना समझ ले कि हर लेवल का गेम खेला हुआ था उसने.
and they work a lot on the mental part of the game. Okay, अगर हम बॉलिंग की बात करें, right? So Ace Sodhi, Trent Bolt, Mill, or Southey, and then you have Satner, and then Jimmy Nesham. Probably, I mean, he's the, the sixth bowler, right? So अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो I think मार्कस टॉनिस भी जो है वो बॉल करता है. आई मीन ही कैन बॉल मीडियम पेस, सो मुझे नहीं पता उसको एज अ बॉलर, सिक्स बॉलर यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में उसको आई थिंक ही डिडंट बॉल एनीथिंग, एनी ओवर. मिच मार्श ऑफ कोर्स ही इज आल्सो लाइक अ मीडियम पेसर. सो ऑप्शंस उधर भी काफी हैं, दोनों टीमों के पास ऑप्शन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिच एंड द कंडीशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन इंटरेस्टिंग थिंग, द पिच, it's going to be a brand new pitch, like a covered pitch. Okay. So as expected कि जब आप फाइनल्स में जाते हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप का जो फाइनल होता है, उसमें हमेशा से वो ब्रांड न्यू पिच ही लेते हैं. फॉर द लास्ट 4-5 वर्ल्ड कप ट्रेंड यही चला आ रहा है. तो ये एक चीज है कि ब्रांड न्यू पिच होगी, और जो कि अकॉर्डिंग टू जो पिच क्रिएटर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, कि इट विल बी अ गुड बैटिंग ट्रैक. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक that the dew factor will come into the picture? Because semi-final में हमने उतना नहीं देखा. I mean, traditionally दुबई में ड्यू फैक्टर आता है इस पूरे टूर्नामेंट में और इन दिस सीजन, लेकिन पाकिस्तान के मैच में इतना ड्यू नहीं था. इफ यू नोटिस कि सबके पास टॉवल्स भी थे, बट आप इतना नहीं लग रहा था कि बार बार बॉल जो है वो वेट हो रही है और उसको क्लीन कर रहे हैं. तो डू यू थिंक कि कल ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा? और टॉस अगेन, यू थिंक कि जो टॉस जीतेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जीते या न्यूजीलैंड जीते, कोई बॉलिंग, राइट? आई मीन देयर इज नो अदर ऑप्शन. नो वन इज, यू हैव टू कंसीडर ड्यू फैक्टर सर. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए पाकिस्तान का मैच जो है ना, क्या उसको विजिट करना, आई बिलीव इन दैट. मैंने बड़ा सोचा बैठ के 2 दिन तक, एंड आई बिलीव पाकिस्तान लॉस्ट. सोचो यार, इट्स गॉन, इज हिस्ट्री. पाकिस्तान लॉस्ट ओनली बिकॉज ऑफ because the panic set in the end. Panic हो गया in the end, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन वही वाली बात है कि you win the toss, you ball first. You ball first, yes. Definitely. और मुझे ये लगता है एक और भी चीज है. आई फील लाइक कि जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट सेमीफाइनल में कि पाकिस्तान should have scored maybe 15 more runs or 20 more runs. मुझे लगता है कि the way Wade hit 3 sixes to Afridi, अगर पाकिस्तान, if Pakistan had scored 190 run, they would have chased that 190 also last over में. तो मुझे कल भी यही लगता है. I mean, tomorrow what I am thinking, कि अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करता है, टॉस जीत के, लेट्स से न्यूजीलैंड टॉस जीतता है, ऑस्ट्रेलिया को बैट करने के लिए बोलता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है, न्यूजीलैंड को देता है, even if they score 180, 190, I think the second team which will bat is still they have a chance, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू में 10 ओवर्स में थोड़ा जब बॉल न्यू होता है, सीम भी है, आपको शुरू में इनिशियली स्विंग मिली आफरीदी को, उसके बाद लास्ट 10 ओवर्स में मुझे लगता है कि विकेट थोड़ी इजी हो जाती है, बॉल आपके बैट में रिलेटिवली आने लगती है कंपेयर टू फर्स्ट 10 ओवर्स. तो मुझे लगता है कि शायद आपको लास्ट 10 ओवर्स में यू कैन स्टिल चेस 100-120 रन अगर रह गए. ऑलवेज चेज, बोथ द टीम आर गुड चेजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अब दूसरा एक और बात भी है ना, व्हेन यू हैव अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू ना, यू कैन अचीव एनीथिंग. और ये जहां तक वेट की 3 सिक्सेस की बात है, अब मतलब अब वी डोंट वांट टू गो बैक ऑन टू दैट गेम अगेन, बट या आई बिलीव वही वाली बात है, दे पैनिक्ड इन द एंड. वो आई बिलीव जस्ट अ टंग इन चीक सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि इट वाज गुड फॉर शाहीन के हसन ने कैच ड्रॉप कर दिया, बिकॉज़ एवरीवन स्टार्ट ब्लेमिंग हसन, बट आई बिलीव उस कैच ड्रॉप होने के बाद ही पाकिस्तान मैच जीत सकता था. बट लेट्स क्लोज द टॉपिक ऑल टुगेदर. let's just forget it, man. Yeah, I mean, अच्छा भाई, एक और चीज इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे जो फिंच ने, इफ यू रिमेंबर, जब फिंच आया आफ्टर विनिंग द मैच, उन लोगों का टर्निंग पॉइंट था व्हेन दे बीट इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड सबसे टॉप की टीम थी. तो आई थिंक वहां से एक उनको एक चार्ज हुआ, उन लोगों को समझो रिचार्ज हो गई उनकी सारी बैटरीज, जो कि शुरू में नजर आ रही थी कि यार ये तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम ही नहीं दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं है. तो वो टर्निंग पॉइंट था. और let's talk about the prediction, okay, yeah, there are a couple of players, होता ना unsung heroes. I believe अगर आप देखो ना ऑस्ट्रेलिया में सबसे important player है, if you ask me the MVP, it is Marcus Stoinis. जिस तरह से उसने मैच जितवाया against South Africa, very cool, calm, very underrated player, yes, extremely calm and composed.
You He know, is always. के खिलाफ भी अगर वो नहीं हो तो मैच हार जाते. Yes. Again against Pakistan. So prediction के बाद बात है, I believe Australia is going to win it. You know, I'm quite sure because Okay, two things. So one is the prediction, and then who do you think will play a key role from both sides? Okay, the reason I say Australia is going to win it because Okay. key matches में तो ये जो नॉकआउट मैचेस उसको तो वो लोग चैंपियंस हैं, हारते नहीं इतनी आसानी से. और अगर रिकॉर्ड देखें हेड टू हेड तो ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज डिफीटेड न्यूजीलैंड. You know, so that's one thing. Secondly, जो key matchups हो सकते हैं, जो key players, Stoinis can be very important, and David Warner. Okay. David Warner is going to bring his A game again. और bowling में आपको बता दूं, Zampa will run through their middle order. Okay, so ये फैसल की prediction थी. Now when it comes to me, you know, my prediction, I mean, may the best team win, but I want, if you ask me, you know, if I have to pick one team, then it's going to be Kiwis. So I want New Zealand to win, and I believe they can win, although they have not got a good, you know, good track record when they play against Aussies, you know, in the finals or semi-final. But I believe tomorrow is Kane Williamson, you know, that's his day. So key batsman, मुझे लगता है कि क्योंकि semi-final में वो नहीं चला है, so Guptill and Williamson, they will be the key. And from the bowling point of view, I think Ace Sodhi, you know, that's from the New Zealand side. From England, from Australia side, Smith. I mean, काफी time से due है. Smith hasn't performed in this tournament. I believe कल शायद Smith को हमें देखने को मिले कि Smith may score some good runs. And from the bowling, Hazelwood definitely is there, and Zampa, of course. So let's find out tomorrow. You know, yeah. Prediction हो गई, आतिफ की भी prediction हो गई. We'll meet up again after the final, and then we will discuss about, you know, कौन जीता, कैसे जीता. So I think that's it for the tomorrow final. And now, Faisal, you have got something. You have another news. You know, let's start. You know, it's बहुत ही famous news, I believe, for last 3 weeks. You know, in fact 2 weeks. The feud between Dr. Noman and Shoaib Akhtar Saab. You know, yes. The thing is, I just do not talk a lot about it. First of all, you know, I'm a bit disappointed with a couple of things. You know, what Dr. Noman did was bad. You know, वो uncalled for. उसकी कोई justification नहीं हो सकती है. Shoaib Akhtar is a national hero, और साथ से आता है, as a host you cannot do this thing. But what followed after that is that, you know, people had a field day on social media. The actors jumped in, and, you know, politicians jumped in. But the worst part is that I saw a couple of, you know, interesting YouTube programs where, you know, there was a lot of character assassination and everything. So my message is very simple. Yeah, just don't try to make videos, or don't try to capitalize on others people's reputation. It is disappointing. See, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन यार, we are not. I don't think so. It's very bad. If we talk about people's reputation, it's bad. So in many ways, it's good कि वो दोनों में दोस्ती हो गई, very nice. But the disappointing जो aspect जो था, बहुत disappointing था कि people had a field day, which was very disappointing. Shoaib Akhtar, if he's a national hero, तो Dr. Noman is not a national villain. You know, उनकी एक खिदमत है, especially media में. मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने PTV sports को establish किया, and then he brought in all the international stars. Oh yes, yeah. I mean, you know, as an expert उस जमाने में जब कोई पाकिस्तान आना नहीं चाहता था. So I believe, you know, my message is सबको, and all our YouTubers and everything, create good contents, but don't play with people's reputation. That's it. You know, I think वही बात है ना कि देर आए दुरुस्त आए. शोएब अख्तर ने यही अपने उसमें बोला, तो I am glad patch up हो गया है, and let's just move on. I mean, Shoaib Akhtar, I mean, he's our national hero. Dr. Noman, I mean, he's a ambassador for, you know, promoting cricket in Pakistan for the last many years. So I'm glad, you know, patch up हो गया. जिसकी गलती थी उसको एहसास हो गया. So let's just move on. And that's very important, Athavar. Will be my last sentence. What I'm seeing in the last 2 days कि अब जो है ना वो बंदूक वक्त जो है ना हासन से हट के शाहीन पे उतर जा रहा है. I'll say one thing, guys. Let them go. Shaheen Afridi ने अगर 3 छक्के भी खाए, तो don't forget he was the one who broke India's backbone in the first match. So please, guys, you know, stop this. ठीक है, बिल्कुल. लेकिन I think शाहीन, क्योंकि अभी he is still 21 years old, लेकिन आपको
लर्न करना होता है अपनी मिस्टेक से। ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप है तो आप यू विल रिपीट अगेन द सेम मिस्टेक। आपने 3 सिक्सेस खाए, यू कुड हैव चेंज योर लेंथ, यू कुड हैव चेंज योर डायरेक्शन, पेस, बट आपने नहीं किया। आपने यॉर्कर के चक्कर में आपने सारी जो है फुल लेंथ बॉलें कराई और उस पे हुआ। बट एनीवे जो हुआ, ही विल लर्न। आई मीन, ही इज स्टिल यंग, he is a superstar. So all right, let's conclude our channel. Thank you everybody for watching this, and again, a humble request to all of you, please subscribe our channel, and also keep watching us, and let us know about your comments. How can we improve this channel? We just started, so it's still a long way for us, and we are trying our best to improve our channel and all the different content and everything. So please do let us know, and we will be back tomorrow after the final. So thank you, take care, and see you next time. Ciao, thank you.